in that chase, and if they had done things slightly differently, it could have been a different story. But I think South Africa held the nerve very well. On a Rabada bowled extremely well, and I said he may not be in the team, but came back, proved me wrong. Bowled extremely well. 3 for 18, I think he took something along those lines. So pretty fantastic effort, and it was just a great game of cricket. I really thoroughly enjoyed watching it. Right, Younus, once again South Africa win. As Erin said, they have been unbeaten so far. But why do they make this so difficult for themselves? Why can't we expect a straightforward clinical win from South Africa? They have to go through their ups and downs. आज भी वही हुआ. मेरे ख्याल से आज उनको टीम यूएस ने एक मौका दिया उनको बैट करा के कि वो अपने वाम जो ना फैला दें. उन्होंने अच्छा किया, लेकिन फिर समहाउ यही होता है कि वो पार्टनरशिप होती है. अगर मैं उनकी बात करूं तो 110 रन की जो डी कॉक की और एडम मार्करम की जो पार्टनरशिप हुई है, वो एक उन्होंने टून सेट किया. लेकिन समहाउ फिर उन्होंने, अगर मैं बात करूं, वही जो कैप्टन्स बात करते हैं कि 10 से 15 रन शॉर्ट हो गए, 19 नंबर वो खेलते हैं और वहाँ रन नहीं करते. तो मेरे ख्याल से देखें, ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि क्रूशल मोमेंट थे जिसको आपने विन करना है. उसी तरीके से फिर सेट होने जा रहा होता है और 18 ओवर में वो फिर 22-23 रन. मतलब है कि ये अगर आपने देखें एक मेगा इवेंट खेल रहे हो तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ये बहुत आपको विन करे. छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जिसको आपने विन करना होता है. लेकिन चलिए, एक अच्छी बात है कि हमने देखा है कि जैसे ही टीम साउथ अफ्रीका पे प्रेशर आती है तो वो क्लैप्स हो जाती है. तो ये अच्छा है कि जितने भी उनके गेम्स हो रहे हैं वो बहुत क्लोज मार्जिन से जीत रहे हैं. इवन आज भी जगह जिस तरह रन ऑन द बोर्ड थे उनकी, हमने बॉलिंग से एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम 40 से 50 रन से मैच जीतेंगे. और एक टाइम पे ऐसा हो भी रहा था कि आपने 5 से 6 आउट किए हुए, लेकिन फिर आप 170 प्लस रन करा देते हैं. तो मेरे ख्याल से ये एक ठीक है, आप लर्न करते हो. लेकिन ये मुझे लगता है कि ये इनके साथ ये इस सिचुएशन में हो जाए, ब्रिस्बेन के सेमीफाइनल में जाए तो वहाँ पे कोलैप्स हो जाए. तो ये उनके लिए एक एज अ टीम अच्छा है कि एटलीस्ट वो जीत रहे हैं. और उनकी जो बैट की फॉर्म थी, जो कि आज लगा कि 2 से 3 पार्टनरशिप हुई और उन्होंने उसको कैच किया और मोमेंटम को अपने पास रखा. और फिर जिस तरह उनको एक मौका मिला कि फ्री वो खेल सकें, उन्होंने आज डिलीवर किया. आज ठीक है, मार्जिन कम रहा जीतने का और शायद नेट रन रेट पे भी थोड़ा सा वो इम्पैक्ट पड़ा ज़रूर होगा. लेकिन विन होती है और पहला मैच विन करना बहुत ज़रूरी, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी सिचुएशन में हो. बिल्कुल हफीज़, हमने टॉस के बारे में बहुत बात की. वी स्पोक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ टॉस, द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉस, एंड इवन इन आवर प्री शो वी सेड कि इतना मैटर नहीं करा. आज फिर साउथ अफ्रीका टॉस हारे, दे वर सेंट इन टू बैट. एंड वही बात जो हम बार बार कह रहे थे कि उन्होंने चैलेंज अपने ऊपर लिया एज अ बैटिंग यूनिट. एंड फाइनली द रन्स केम ऑफ द बैट्स ऑफ डी कॉक, मार्करम, फिर क्लासन ने भी पिच इन किया. सारे बैटिंग ने आई थिंक उनके आज कॉन्ट्रीब्यूशन किया. सो अ गुड डे विद द बैट फॉर देम. बट व्हाट विल यू से अबाउट द मैनर इन विच दे वन द गेम? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक ऐसा मैच जो हम सब लोग बड़ी देर से मिस कर रहे थे, जिसमें हाई स्कोरिंग जो है इवेंट हो, वो आज हमें देखने को मिला. 194 हुआ, दूसरी टीम भी चेज डाउन कर रही थी. आई एम सॉरी मार्टिन, बट द डिफरेंस वाज Rabada's. Rabada's falling. But this is how it should be. The top players have to perform at the right time. So I think he took the responsibility as a leader of the bowling. And I personally feel like I'm really impressed with the chase from US. They were batting brilliantly. They chased down in the right spirit of the game. And I think the difference for only Rabada. I personally feel like his 4 overs basically given them nothing and taken all the crucial stages away from them. And then I think I'm really impressed with the all-round performance of Harmeet Singh. First he delivered with the ball and then with the bat. He was smashing the ball everywhere. So overall it was an enjoyable game for everyone as a fan. It absolutely was. They were well in the contest for most of it. Let's remind ourselves of the story of the game with the match summary, because, well, Team USA, they won the toss. They elected to bowl first, sending in the Proteas, and 194 for 4. By far their best score in the tournament so far is what the South African bowlers managed to put on. And they wanted runs from up the top, and that's exactly what they got from de Kock. 74 of 40 balls. He was blistering in the power play. He kept the momentum going right throughout those middle overs. And even though they lost a few wickets, Aiden Markram as well, you wanted a big one from him, Professor. That's exactly what he gave. He's getting there. He's getting there. 46 of just 32. And Heinrich Klaasen, we knew he'd be damaging against spin. 36 of 22 balls today. And Tristan Stubbs finishing off the batting for the Proteas. But Netravalka, the way that he manipulated the ball for USA, 2 for 21, just beautiful work from him again. Backed up by Harmeet Singh, as Professor mentioned as well, 2 for 24, bowled beautifully. In reply, Team USA, they got off to an
absolute flyer. There were 51 in the first 5 overs, and then Andres House, well, 80 red ink off 47 balls for him. He had 100 in the tank today, it has to be said. He was doing absolutely brilliantly, trying to break the back of this run chase for Team USA, supported brilliantly by Harmeet Singh as well. 91 in 7 overs, that partnership was. It very nearly took the game away from South Africa, but Kagiso Rabada, he was the difference with the ball today. 3 for 18. Maharaj 1 for 24, quite tidy as well. Nokia took a pole, and Shamsi also, but very expensive the last 2. All in all, though, South Africa won by 18 runs, and they'll be so happy to get their Super 8 off to a flying start. Now, one man who South Africa desperately wanted to be back in the runs today was Quinton de Kock. And interesting listening to Dale Steyn in the commentary box say, you know, I feel like now he's in the West Indies. He's gone out on a fishing boat. He's relaxed. He's feeling a lot more comfortable. You take the man fishing. Not only does he find fish, he finds runs at the same time. A relaxed man equals a run machine, it seems to be. Let's relive some of the highlights from his knock. But, you know, QDK, we haven't seen the best of him, Martin, until today, and just on song, wasn't he? Just beautiful to watch. Targeting that short boundary as well with the wind. Yeah, we saw signs in New York in a couple of the innings where he played some really nice shots on a difficult wicket. But today, you know, on a more even wicket, you know, he was able to get a lot more of his shots away, and he just hit it so cleanly, didn't he? You know, a little bit of a top edge there, but the previous balls that we've seen there, it's been all been straight out of the middle of the bat, and yeah, he just looked on song. I mean, everything he tried, it came off for him. So got them off to an absolute flyer. Bit of finesse there as well. You know, as soon as the ball was through, it was 4. I mean, didn't even have to run. But he was very brutal. Anything, you know, remotely short, he hit to the short boundary with the wind. Just a really smart innings in the way he went about it. Leave him fishing, hey? Yeah, well, I guess he's going to go fishing a lot more while he's over there, to be honest. But that was a fantastic innings and something that the team needed, not only for him, but for the team as well. And, you know, put them in a great spot. And that partnership with Aiden Markram, 110 off 9.4 overs, which really got the whole momentum going. They worked well together. Markram not quite as quick, but still, 143 strike rate. He did his job for the team. Yeah. Right, coming back to de Kock's inning, यूनुस हमने प्री मैच में भी बात की कि साउथ अफ्रीका जहाँ पे जिनको जो इशू क्रिएट हो रहा है उनकी परफॉर्मेंस के साथ top order. We talked about the top order in their first 4 games of this World Cup. Combined strike rate was under 100. 80s में उनका strike rate था. Today, de Kock was striking at 185 just by his bat. 74 runs off 40 balls. That included 5 sixes and 7 fours. A great answer because उन्होंने भी अपने post match में यही कहा कि we got a bit of a tricky condition with the wickets. You know, New York में थोड़ा सा confusing रहे वो, but he said कि finally now the conditions are working in their favor and he's scoring. पहले मैं बता दूं जी यही बात अब्दुल्ला ने की थी, आपको समझ नहीं आई, माइकल ने की तो आपको समझ आया। I think जो हमारा शो देख रहे हैं उनको जवाब मिल गया। The metaphors of game on है will be a separate segment from now on. Continue जी। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए आपके जो टॉप के प्लेयर्स होते हैं वो ड्यू हो जाते हैं बाज़-औक़ात, और जैसे क्विंटन डी कॉक की बात करें, हमें पता है कि वो जब वो खेलते हैं और ख़ास तौर पे जब वो सर्कल को यूटिलाइज़ करते हैं और जो फर्स्ट पावर प्ले है वो इसी तरह ही खेलना है आपने। आज की बात करें तो अगर हम पिछले मैचेस की बात करें, जिस तरह वो आते थे न्यूयॉर्क की पिच पे, वहाँ भी इसी तरह ग्लिम्सेस थी, वहाँ पे 1-2 शॉट खेलते थे और उसके बाद वो आउट हो जाते थे। और हम बार बार ये बात कर रहे थे कि क्रॉस बेडेड शॉट नहीं खेलने चाहिए, लेकिन देखिए बात जवाब को हमेशा अपने आप को बैक करना है। जो मैं हमेशा बात करता हूँ, जो आप बाजू का हम कुछ बैटर्स के लिए बात करते हैं कि या ये स्लो खेलते हैं या ये तेज़ खेलते हैं, ऐसा नहीं है। आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना है, पिच की कंडीशन के हिसाब से खेलना है। तो बाज़ औक़ात आपको ये तब आता है जब आप लॉन्गर वर्जन के क्रिकेट खेलते हैं, और यही हुआ। ठीक है, हम उसमें आप ये कह रहे हो फिशिंग पे जाते हैं तो ठीक है, आप जब जितना रिलैक्स होते हो आप परफॉर्म करते हो, लेकिन जब आप टीम के लिए खेलते हैं तो समहाउ कहीं ना कहीं, और आपको टीम की बैकिंग भी होती है, तो समहाउ ऐसी परफॉर्मेंसेस आती हैं। मुझे ये लगा कि फिर वो 3 से 4 ओवर और खेलने चाहिए थे, क्योंकि जब ऐसा मोमेंटम आ जाए, ऐसा टाइम आ जाए, तो आप गो फॉर द किल और बड़े रन्स करो। अगर आज 100 करते तो मेरे ख्याल से, अगर हम इनकी बैटिंग की बात करें और इनकी रन्स की बात करें, तो फिर हमें ये लगा कि 15 से 20 रन और हो सकते थे। इसी तरह अगर हम टीम यूएस की बात करें तो वो करीब क्यों पहुँचे, क्योंकि एंड्रेस होस ने जो है वो आखिर तक खेला।
ठीक है वो पार नहीं कर सके, लेकिन एक बैटर को टिल एंड तक खेलना होता है। जब वो आपके पास एक आपका सीनियर प्लेयर टिल एंड तक खेलते हैं तो 180, 190 या 200 होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इसी तरह आपको लर्न करना है। लेकिन जो टॉप का प्लेयर होता है वो क्रूशियल टाइम पे जब परफॉर्म करते हैं तो आपकी टीम जीतती है। चले बिल्कुल, अभी एडन मार्करम की इनिंग्स के ऊपर भी एक नजर डालते हैं, बिकॉज हफीज वी टॉक्ड अबाउट हिम एंड यू वर hoping to get some runs. He was your MVP for today's match, and I think he listened because, well, as a batter, he was all over the park today, getting runs, and of course, at the right time, जैसे अभी यूनुस कह रहे थे। तो असल में आप किसी के जब फैन होते हैं तो आपको वैसे ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ अगर वो बेसिक्स ऑफ द गेम को फॉलो करके खेले तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे मैं जब भी खेलते देखता हूँ, मैं इनके अंदर एक प्योर क्लास देखता हूँ, और इनके अंदर वो जो क्लास है इनकी राइट बेसिक्स ऑफ द गेम से डेवलप हुई हुई है। बहुत शानदार प्लेयर हैं, रेंज ऑफ शॉट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, स्पिन के गेम्स भी अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेलते हैं। और आज भी उन्होंने देखें कि स्टैट ये बता रहे थे कि ये अच्छा नहीं खेल रहे जो पहले 4 मैच थे, लेकिन मैंने आपको बोला था कि जो अच्छा बैट्समैन होता है जिसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होती हैं वो इंतज़ार कर रहा होता है उस राइट कंडीशंस का। जैसे ही उसको वो कंडीशन मिली, डी कॉक भी अपने उसी फ्लेयर में नज़र आए जैसे वो खेलते हैं, वही स्पाइस हमें उनकी बैटिंग में नज़र आया, वही शॉर्ट रेंज कहीं से वो गुम नहीं हो जाती, वो गायब नहीं हो जाती। सिमिलर मार्करम एक अच्छी इनिंग्स, हालांकि 3-4 जब आपकी बैटिंग के फेलियर्स आते हैं एज ए बैट्समैन तो आप बहुत सी थॉट्स में चले जाते हैं, और समवेयर अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो या उसने ना चखा हो ये इंटरनेशल लेवल का मटेरियल या बैकिंग ना हो तो वो इर्द गिर्द आपके एक नेगेटिविटी अरेंज करती है या क्रिएट कर देती है। बट आई थिंक ही केम आउट विद द राइट माइंडसेट टुडे। He controlled the innings very well. He given all the momentum to the team required at that particular time of the game. और जिस तरीके से I think he was speaking for the form, और लेकिन वहाँ पे आउट होना कोई मसला नहीं है, but to me the way he handled things well, it's a good sign for him and also for South African fan that most of the top order batsmen are scoring runs. हेनरिक क्लासन ने पहले भी स्कोर किया हुआ है, मिलर ने पहले भी स्कोर किया हुआ है, लेकिन the way these two top players perform, it will be a good sign for South Africa. Right. And as a captain also, I mean, it gives a lot of confidence when you're getting runs, when you're leading from the front with the bat as well, no matter what the conditions are. And he was struggling with that, and that could be seen in his leadership as well. And I think now they will draw a lot of confidence, not just from de Kock, but also from Aiden Markram. Yeah, I mean, to be fair, I think he's dug deep as a captain. They've found ways to win no matter the circumstances, and whilst it hasn't always been pretty or easy, somehow the Proteas are still getting it done. So, perhaps this is the side, the underdog side, that could take the World Cup this time. We always say in years gone by where they've looked like the strongest side and they've fallen at the last hurdle after looking so good. Maybe this is the way they're doing it. They scrap to these wins no matter what, and he's had some excellent captaincy all the way through, I think, which has helped the side, get to this position where, from 5 games they've got 5 wins now. So great for him to get some runs. It was definitely the partnership with QDK that got the job done for the Proteas today. But let's not forget how important the middle order is in any context of the game, whether it be having to deal and accelerating that run rate and getting towards that 194. Heinrich Klaasen was wonderful with the bat again today. He's been a little light on form so far in this T20 World Cup, but a really well played 36 of 22 balls today. We'll relive the highlights from his innings there. No boundaries, just dealing in maximums as he does. 3 big sixes there. Martin, he's so good when he gets going, isn't he?